Namaskar, Ashish Mittal from Aarsun Woods, and today I'm showing you one more temple. More because this is not the first video of temple, and I think more than 100 different models, sizes, designs, with door, without door, with gopuram, lower chowki, a lot of different designs I've shown you with explanation and details about the vastu, about each part, how it works, and a lot information we have already provided. One more design I'm showing you today is 5 feet left to right, from that corner to this corner, out 5 feet. Total height is little more than 7 feet, and front to back this is 24 inches, 2 feet. The chalky height from the ground is 30 inches, and then we have four doors, foldable doors, and the top part. Interesting part about this unit is it is completely customized to the client's requirement, and this happens with almost all the units that we make. मंदिर में जब भी आप अपना मंदिर प्लान करते हैं, आप मंदिर अपना डिजाइन करते हैं, तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो शायद आपको पसंद ना हो और बहुत कुछ आपको चाहिए दैट यू वांट इन योर टेम्पल. तो अगर कोई मंदिर आपके हिसाब से आपके पसंद का डिजाइन बन जाए तो नथिंग बेटर देन दैट. उससे बेटर क्या होगा. मोस्टली क्या होता है कि जब भी आप किसी टेम्पल वेंडर के पास जाते हैं, वेंडर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनके पास लिमिटेड 5 6 7 डिजाइन होते हैं और वो उसी को ही डिफरेंट साइजेस में बनाकर आपको देते हैं. दैट्स व्हाई दे आर द वेंडर्स. वी आर मंदिर मेकर्स. हम मंदिर बनाते हैं क्योंकि ये बनता है कस्टमाइज्ड, bespoke, एज पर डिजाइन, मेड टू ऑर्डर. आपने जो साइज दिया, आपने जो डिजाइन दिया, जो आपने पसंद किया, हम वो बनाते हैं. And as one of our clients said, and we really love that comment, you don't make temples, you're not manufacturers, you design the home for our gods. बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और इतना टाइम लगाते हैं हर चीज़ समझने में, आपके हिसाब से बनाने में, और फाइनली आउटपुट ऐसा जो आपके सामने अभी नज़र आ रहा है. If you look at the bottom part, on the chalky part, we have a lot of storage here. Here we have two cabinets, one here, one on the other side. Then we have a diya tray right in the middle, a big diya tray. And then we have storage area in drawer shape. So we have 3 drawers and 2 cabinets. And then we have this internal area of the doors. Now the interesting part here, I'll show you. What happens is when you have bigger units and you go for a door, if you make a single door, now you can see how much area it is covering outside the unit. Now if you have this temple in a single door shape, itna portion, this portion will be always captured. ऐसा हमेशा रहेगा. It will be acting like a partition. अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, then the other area is like a partition for me. And if we make it in dual fold like this, so you can see a lot of clear area is visible. So this is a nice concept for the door, a dual folding door, and this is what we do in all our bigger units. Now moving further, on the top part, if you see, we have a Shankuchakra teak design, and there we have Lord Hanumanji and Garuda ji, and the design on the sides. This one doesn't have a gopuram. So as the client wanted, we designed that. If you look at our earlier videos, you will see a lot of different work that we have done, very different niche designs, made to order designs, and almost every design in the book that you have for temples, we have done already. और अभी क्या हो रहा है कि वही डिजाइन डिफरेंट साइजेस में, कलर्स में और पैटर्न्स में बन रहे हैं. सो वी आर गेटिंग अ डिफरेंट मॉडल एवरी टाइम. मंदिर बनाना सिर्फ एक कला नहीं है. मंदिर को समझना पड़ता है. समझना इसलिए क्योंकि वो आपके देवताओं का निवास है. देखिए, मंदिर की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है. पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाई डू यू नीड अ होम टेम्पल. होम टेम्पल इज अ प्लेस that absorbs all the negative energy from your place and provides the positive energy. आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को मंदिर आपका सोख लेता है.
और ये काम एक नेचुरल प्रोडक्ट ही कर सकता है। प्लास्टिक्स, मेटल्स, ये चीज़ें ये काम नहीं कर सकती। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेड इन द वास्तु ऑल्सो, इन द पुराणाज ऑल्सो, that you buy something like a wood unit or a stone like a marble or something. These things can be used for a temple. मार्बल का मंदिर या पत्थर का मंदिर मोस्टली उसकी स्थापना करनी होती है, तो थोड़ा सा उसका प्रोसीजर लंबा होता है, बट वुड टेम्पल्स आर ऑलवेज इजी टू इंस्टॉल। और अगर आपको चेंज भी करना है, यू आर चेंजिंग द यूनिट, देयर इज नो पर्टिकुलर प्रोसीजर कि आपको फॉलो करना है। For the mandir installation and Shuddhikaran, we have posted a video earlier with Pandit Mudit Kumar Jhaji, where he has explained all the details, how the mandir is installed, how should the Shuddhikaran be do, and what has to be done. You can have a look at that video and it'll give you all the details about that. If you want to understand more about the Vastu part of this mandir, video number 145 I have posted earlier. You can have a look in detail. I've explained there. The design is here. arsunwoods.com is our website. There is section of temples, dedicated section है temple का। जितने मंदिर आप देखना चाहें उसमें सब मंदिर के डिजाइन्स हैं, अलग अलग साइजेस में, कलर्स में, पैटर्न्स में, डार्क कलर विद गोल्डन, एंटीक गोल्ड, वाइट, कॉपर एंड नेचुरल फिनिश, ऑलमोस्ट ऑल द कलर्स वी हैव डन। तो आप जैसा भी चाहें, यू हैव अ लुक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट द प्राइसिंग, अबाउट द डिटेल्स, कोई वास्तु का क्वेश्चन है, कोई पर्सनल क्वेश्चन है, you can always contact us. The number is right here, or drop in a comment. We'll be happy to talk to you. उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आएगा। ये हैंड वर्क है, हाथ से बनता है, लोकल आर्टिशियंस का काम है, एंड दिस वन इज गोइंग टू बैंगलोर। Every part of India and most of the parts of the globe we cover. So anywhere you are, contact us. We'll make the temple as per your choice and deliver it. Hope you like our work. Thank you. Dhanyavad.